do it. So I'll be recording these, dear students. So remember that there are 5 heads of income and salary explained, and today I'll be taking income from house property. But I cannot give you total, because when you complete a particular topic, it takes a lot of classes you need. But this internship of 30 days, I have to cover up many things. But I'll give you some ideas which will help you to study and understand most of the things, and that's why I'll take one chapter very in a short class only. It's very short. So let's concentrate on house property. There are 5 heads of income, all of you know. 5 heads of income, all of you know. In salary, house property, business and profession, capital gains, and anyone tell me, and Other sources. other sources. Very good, Vipana. So let's now concentrate on income from house property. And you can see my screen? Yes or no? Vipana, can you see the screen? Yes, yes, sir. Very It's nice. visible. Very nice. One person should tell me, then, so that I can get to know whether you understand or not. So I am completely audible and visible. Fundamentals of taxation, and the topic is income from house property. And you are the students, undergraduate internship students of different streams. Let me take 30-second time to say what we are going to learn at the end of this class. When this class will be over, what are the things you are going to learn from me, from the class? Number one, you shall be able to explain the meaning of income from house property. पूरा clear हो जाएगा. And understand the condition for charging taxes under this head. There are some conditions which have to be fulfilled for charging income from house property. You can distinguish between self-occupied and let-out properties. House may be of two categories. One is self-occupied and another is let-out property. You understand the meaning, self-occupied and let-out property. And yes, Atikul is joining. Yes, I have admitted. And you can calculate the gross annual value, net annual value income from house property. That's the most important thing I'm going to teach you, practical. See, in house property, the tax does not very much depend on rent only. Rent is one of the factors only. Rent is very important, but it is not the only factor on which house property tax depends. Rent is only one factor. Even if the house is not given on rent, if the house is not let out, then also there may be tax. I told you several times. So we have to understand how house property is taxed. How? It depends on annual value. Value of the house annually means value of the house during the year. What is the value of the house and what type of value? Value of the house means capacity of the house to fetch rent. Capacity of the house to earn rent. But actually it is not, may not be earning rent. So it depends on the annual value. And remember, in case of self-occupied house, the annual value is originally taken as 0, because self-occupied house you need not pay tax. But other let-out property or not let-out property, property which is not self-occupied, but these are not self-occupied, but it is deemed to be let out. So when the house is deemed to be let out, it is taxable. I'll teach you how. So for that, you have to know how to calculate gross annual value, how to calculate net annual value, how to calculate income from house property. These are the very, very important things. I'm going to make it clear today only, and in a very brief. And I understand that you are very intelligent students. I have already found, and you are very sincere, and you are following my instructions. That is, after my class, you do whole day the assignments, and this process will help you to clear all these things. But generally it's not possible in normal course of classes. It is not possible to learn all these things so quickly, but I am making something which is impossible, and you are also making something which is impossible. And remember, in house property, there are certain deductions when the property income is calculated. That calculated income is not directly taxable. That calculated income will have lot of deductions, and as students, you remember the deductions come under 24, section 24 of Income Tax Act 1961. And again, I must tell you that Income Tax Act 1961 is actually, it is stopped, but it is still there. I told you that it is not altogether discarded or thrown out.
It is still there. But the main rule that is from 2026, 1st of April, the new Income Tax Act of 2025 is in force. We shall definitely learn it. As soon as I complete these things, I'll give you the ideas of Income Tax Act 2025 as soon as possible. But before that, you have to know something about Income Tax Act 1961. And this, I see in number 5, the deductions under section 24, these deductions are still there in the new act, but the section will change. The section may change because sections will totally change. And after tomorrow also I'll be taking classes in this 1961. And after that, I'll drag you towards the Act of 2025 and tell you why this new Act of 2025 has come. What is the reason? All these things I'll be discussing, but now you understand what is as per Income Tax 1961. And if you are suppose practicing and giving service of taxation to your clients as per Income Tax 2025, does not mean that you should not know about 1961. You should know about 1961 also, but it was not possible. It takes years, but I am giving you a few days, some glimpse of the ideas of 1961 Act. And remember, whatever I am teaching you 1961 Act, these are not going to be fruitless. When I'll be teaching Act of 2025, I'll take these things only will be there, but little change. That's why I am teaching this old Act. It is very much useful. And it shall be able to solve basic numerical problems relating to house property income. I'll be giving you today only, in this class only, I'll be giving you the problems of house property income. So let's go ahead very simple way and very fast. I have asked you some question. If you live you are having a house and you're living in yourself, is it taxable? Anyone must answer. Is it taxable? Your house, you're living yourself. Taxable? Yes or no? Who will reply? Opening No, chat sir. box? Huh? Okay, I am opening chat box. That will be better for you. Chat box. Where is chat box? Where is chat box? I'm not finding it. Chat box. Anyway, yes, chat box is there. I found it. So, no. Right, you have said no. You have said no. Very nice. So, if you rent it to someone, is the rent taxable? Rent is taxable? Tell me. You have rented, so rented property, it is taxable. Yes, and if you own two houses, how will it be taxable? One will be your own house, and other let out. We shall be discussing all these things, dear students. Very soon we are discussing all these things, and we shall be. I am just starting this class this year, but I'll be discussing the Income Tax Act, taxes income earned from owning house property and lands attached to it. This is known as income from house property. And what is income from house property? All of you know. It comes out of income from house, building, office, shop, warehouse, for whichever purposes you have let out your property, whatever it may be, but it will be earning income from house property. And the land attached to the building is also house property taken. And suppose you have you let out a building, your building you have let out to someone, that building will fetch you rent, but the land, the say corridor or the courtyard or the compound nearby, this is also fetching you rent, and this rent is also income from house property. Now condition, you have to remember some conditions. Condition as per section 2022. This section is going to change in this. This will be changing in the new act. New act, the section may be changed, but other things will remain the same. These things will remain the same. So what is it? There are some conditions of taxability. In what case house property will be taxable? See, there must be a building or land attached to it. Suppose there is no building, no land, how can there be income from house property? No building, no rent. It's impossible. House property will not be there. So there should be a flat. It may be flat, ownership flat, flat these days, and it may be house
it may be office, it may be shop, but this house or building or land has to be, it may be godown, it may be warehouse, etc. But remember, if it is a vacant land, that is not coming under income from house property. That will not give you vacant land. I'll explain later on. And agricultural land, the land which is used for agriculture, the land which is used for agriculture, if you get rent from that land, it will not be coming under income from house property. Then sir, ये कहाँ में आएगा? मेरा तो agricultural land है, उसमें मेरा कुछ किराया मिल गया. Dear students, it will become under agricultural income, and agricultural income is not taxable. I told you, and again I'll tell you later on. So you have to see what type of land or building you are having. If it is agricultural land, it will not coming under income from house property. And one more thing you have to remember regarding conditions of taxing house property income, the SSC must be owner. The SSC, you know, SSC must be owner. If you're not the owner of the property, then it will not be income from house property. You SSC may be individual, it may be, you know, different types of persons. SSC may be individual, SSC may be company, SSC may be partnership firm, it may be Hindu undivided family, whatever may be. The rent received by a tenant from subletting is not under this heading. Suppose आपने किराया ले लिया तीन, there are three rooms are there. You have taken a house from someone on rent, and suppose there are 3 parts. And what you are doing, you use 2 parts, and 1 part is given to another tenant, and you are earning money from that tenant. Suppose you are giving 30,000 to your owner, landlord, for 3 houses, and you have rented out one of the 3 houses, and you are earning 12,000. So this is your income. Dear students, it will not be coming under income from house property because you are not the owner of the house. It will be coming under income from other sources. It will not be coming under income from house property. Hope it is clear to you. And these things have to be clear. कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए ना वो तुम ओनर होना पड़ेगा उसको. तुम किराया भी मिला, तुम किसी और का घर से तुम किराया ले लिया, तुम भाड़ा में लिया था, एक पार्ट किसी और को भाड़ा दे दिया, इसको बोलते हैं सबलेटिंग. वहां से जो पैसा है ना वो तुम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि तुम हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है ही नहीं. So hope it is clear. I'm talking in very simple English. Hope you understand these things. And property should not be used by owner for his own business. अगर तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है और हाउस है एंड यू आर यूजिंग दैट फॉर अपना बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और फॉर अपना प्रोफेशन, वहां से जो भी इनकम आए ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा. इफ ए डॉक्टर ओन्स ए क्लीनिंग एंड यूजेस इट फॉर हिज प्रैक्टिसेस, उसमें जो इनकम आएगा ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो किसी और को भाड़ा देना है. नो टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और एग्जाम्पल देखो, राज का एक दुकान है, ये रेंट दे दिया टू ए बिजनेसमैन 20,000 पर मंथ, इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. राज कोई है, उसका एक घर है, वो मकान है, दुकान है, वो किसी को भाड़ा दे दिया, वहां से उसको 20,000 मिल रहा है. सो ये तो अपना यूज नहीं था ना, ये तो किसी और ने यूज कर रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा. लेकिन डॉक्टर का अपना घर में खुद प्रैक्टिस कर रहा है, वहां से भी बहुत सारी इनकम होता है उनको, वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा. इज इट क्लियर टू यू? एनीवन से यस? इज इट क्लियर टू यू? Please, you can type yes. I'll be very happy instead of talking, because unmute the talk and you feel मुझे तो नहीं पूछा, किसी और ने जवाब देगा, ये सब होता है ना, and टाइम भी बर्बाद होता है. So if you understand, I check your chats. So you have understood it. And types of house property, dear students, let us understand the types of house property. Generally, one house that you stay yourself, उसमें तो किराया भी नहीं मिलता है और टैक्स भी होना नहीं चाहिए. हाउस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसओपी, मीन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है, रेंट तो मिलता नहीं है, खुद रहता है तुम, तो उसमें हाउस प्रॉपर्टी का कोई बोलता है इसकी एनुअल वैल्यू कितना है बताओ, तुम बोल देना 0 होगा. अपना घर है ना, खुद रहता है, उसमें एनुअल वैल्यू कितना होगा, बोल दो 0 होगा. जैसे अरुण का एक घर है, वो खुद रहता है, उसको टैक्सेबल एनुअल वैल्यू 0, तो 0 हो गया तो टैक्स चाहिए नहीं. वेरी सिंपल थिंग. सो सेल्फ ऑक्युपाइड तुम समझ गया, हम लोग को प्रॉब्लम में चाहिए. फिर लेट आउट. लेट आउट क्या है, जो भाड़ा में दे दे किसी को. रेट आउट में तो रेंट भी मिलता है ना. द हाउस इज
गिवन ऑन रेंट। सपोज मंथली रेंट 25,000 मिलता है तो साल में मिलता है 3 लाख, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, उसमें टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो हाउस तुम खुद भी रहता नहीं है, भाड़ा में भी दिया नहीं, खुद भी नहीं रहता है, भाड़ा में भी दिया नहीं, यू आर नॉट स्टेइंग योर सेल्फ, यू आर नॉट स्टेइंग योर सेल्फ एंड यू हैव नॉट रेंटेड ऑल्सो, उसको बोलता है डीम टू बी लेट आउट, उसमें भी तुम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे मौत बोले सर तो मैं भाड़ा नहीं दिया सर, मैं तो गरीब हूँ, मेरा 10 बिल्डिंग है लेकिन मैं गरीब हूँ क्योंकि भाड़ा तो दिया नहीं ना। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है आप भाड़ा दिया नहीं तो टैक्स तो दे दो। तो तुम्हारा बहुत सारे घर है, ठीक है, उनमें से तुम एक घर हो सकता है तुम फ्री कर दो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दो अपने रहने के लिए, बाकी जितना घर है ना उसमें तुमको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मैं भाड़ा दिया नहीं, मैं पकड़ लेगा तुम भाड़ा दिया है, सर मैं दिया नहीं तो 20 बिल्डिंग्स है, तुम 20 घर में रहते हैं क्या एक साथ में? तो मतलब एक घर काफ़ी है, उसमें सोता है, उसमें भी खाता है, उसमें गाना बजाता है, एक ही चाहिए ना। अगर अनदर 19 घर, तो मैं भाड़ा दिया नहीं, भाड़ा देने तो टैक्स भरो, क्या टैक्स देगा सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर इनकम तो है ही नहीं, फिर भी दे दो। क्यों सर? क्योंकि मैं मान गया ये तो डीम टू बी लेट आउट है, ये तो डीम टू बी लेट आउट, ये तो ये हाउस से भाड़ा आने का चांस है, तुम लिया नहीं, तुम अमीर है, तुम्हारा बात अलग है, लेकिन मुझे तो दे दो। The houses that you are having 21 you take for your own self occupied, but another 19 houses, और 19 houses you have to pay tax। क्यों सर? कि वो तो डीम टू बी हाउस प्रॉपर्टी है, वो तो डीम टू बी है लेट आउट, तो टैक्स देना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। इतना तो हो गया ना क्लियर? यस बोल दो, इतना क्लियर हो गया? प्लीज से यस। थोड़ा फास्ट गया, मेरा वीडियो देखते रहना, बिकॉज इधर इफ आई एम वेरी स्लो ना इट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो, विल नॉट लाइक इट। सो आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियो एंड यू कैन सी सेम थिंग रिपीट करके क्या करेगा भाई, तो हो ही गया। तुमको रिपीट रिपीट सुनना है तो वीडियो को बार बार बैक करके सुन लेना, क्या है प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो अभी हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, प्रॉब्लम लेट्स लर्न। हाउस प्रॉपर्टी को इनकम है ना, तो जैसे सैलरी में मैं सिखाया था कि बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए इसे सिखाया था ना, लेकिन इसमें है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? दिस इज एक्सपेक्टेड और एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। एक घर है तुम्हारा जिसमें ड्यूरिंग द ईयर कितना रेंट मिल सकता है, मिला है या नहीं वो अलग बात है, मिल भी सकता है, तुम्हारा मिल गया, नहीं तो मिला नहीं है लेकिन मिल सकता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आई बी गिविंग यू डिटेल फॉर्मूला लेटर ऑन। तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? मंथली रेंट सपोज 30,000, तो साल में इसको 3,60,000 हो गया तुम्हारा जीएवी, ऐसे मान लो। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है कैलकुलेशन में, अभी तुमको मैं दे दिया ना, तुम कंफ्यूज होकर छोड़ देगा कोर्स। इसमें तुम्हारा थोड़ा आइडिया दे कि मैं जा रहा हूँ, बाद में टाइम मिलेगा तो दे देगा, खुद भी सीख सकते हो। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो मैक्सिमम रेंट जो आ सकता है तुम्हारा घर से, द मैक्सिमम अमाउंट रेंट विच कैन बी अर्नड फ्रॉम योर हाउस, दैट हाउस, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वहां से तुम म्यूनिसिपल को तो टैक्स दिया होगा ना, म्यूनिसिपलिटी टैक्स, और म्यूनिसिपल टैक्स तुम वहां से हटा दो। सो सपोज 3,60,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स तुम दे दिया था 10,000, तो वहां से माइनस करके ना उसको 3,50,000 पकड़ लेगा, उसको 3,50,000 पकड़ लेगा। क्या पकड़ेगा उसको? 3,50,000 को क्या पकड़ेगा? इसको बोलता है नेट एनुअल वैल्यू। कैसे निकलता है नेट एनुअल वैल्यू? सर नेट एनुअल वैल्यू निकलता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू से वो म्यूनिसिपल का टैक्स देना पड़ता है ना, उसको माइनस कर दो। म्यूनिसिपलिटी का टैक्स कहाँ जाता है? तो लोकल में रह जाता है, लोकल में रह जाए। इनकम टैक्स कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या माइनस करेगा? म्यूनिसिपल टैक्स। So GAV minus MT equal to NAV. You can write it GAV minus MT. MT means municipal tax equal to NAV. एकदम सिंपल इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग, कुछ नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से इनकम टैक्स माइनस म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू देखो, तुम इधर फॉर्मूला बना दिया, दे हैव गिवन ए फॉर्मूला जो मैं तो थोड़ा पहले तुमको देखा है ना। नेट एनुअल वैल्यू मीन्स gross annual value minus municipal tax. I don't think anybody cannot do it. Class 8, 9 student can do it if I teach this way, I am sure.
So are you happy with this? Net annual value clear or not? Yes or no? बताओ yes. If it is clear. Gross annual value से ना म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो. If it is clear to you, please write yes. चैट बॉक्स में लिखते रहो. I am checking it. चैट बॉक्स में लिखते रहो yes 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 yes. I loved it. तब मेरा साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन बराबर चलते रहेगा. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से तुम क्या माइनस करेगा? नेट म्यूनिसिपल टैक्स. तो क्या मिल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू. लेकिन नेट एनुअल वैल्यू जो 3,50,000 मिला है ना, उसमें भी तुमको टैक्स देने का जरूरत नहीं है. उसमें भी टैक्स नहीं देगा. उसमें से कुछ डिडक्शन करेगा और भी. सो सर वो डिडक्शन कौन सा सेक्शन में आता है? तो भाई 61 का एक्ट में तो 24 में आता है. सेक्शन 24 में आता है. तो क्या क्या डिडक्शन है वो बताओ. क्या क्या सर डिडक्शन आने से हम लोग को फायदा है? हाँ हाँ फायदा है. क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस किया नेट एनुअल वैल्यू, सॉरी म्यूनिसिपल टैक्स, तुम्हारे मिल गया नेट एनुअल वैल्यू. नेट एनुअल वैल्यू से तुम माइनस करो और भी कुछ सारी चीज. देखो एक नंबर में क्या करेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो. स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? कि जितना है नेट एनुअल वैल्यू उसका 30%. वेरी सिंपल. वट एवर नेट एनुअल वैल्यू यू आर हैविंग, उसका 30% तुम माइनस कर दो. 30% माइनस करने से, ये सब एग्जाम्पल में दिया है, जो भी एग्जाम्पल तुम पकड़ते हो. एग्जाम्पल सपोज ग्रॉस नेट एनुअल वैल्यू 4 लाख है, 30% हो गया 1,20,000. सो यू रिमेंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है हाउस प्रॉपर्टी में? नहीं सर बहुत ईजी है सर, कुछ नहीं है. और नेट एनुअल वैल्यू से 30% वही है स्टैंडर्ड डिडक्शन. इससे बड़ा कुछ खास नहीं है सर. आई अंडरस्टैंड. इज इट लाइक दैट एज आई एम टॉकिंग? यस सर आई अंडरस्टैंड. नथिंग, कुछ नहीं सर. नेट एनुअल वैल्यू से ना 10% माइनस कर दो. 30% माइनस कर दो सर, नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिडक्शन हो जाएगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा. सर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने से और भी कमती हो गया. देखो फिगर देखो, उधर कुछ फिगर था ना, एग्जाम्पल अलग था, एग्जाम्पल अलग था. सो आई थिंक फिगर, डोंट वरी अबाउट फिगर्स. डोंट वरी अबाउट फिगर्स बिकॉज आई एम टेकिंग डिफरेंट फिगर्स जस्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मूला. फिगर तो तुमको जो मिलेगा कर लेना. बट ये बात याद रखो कि जो भी तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू होगा उसका 30% होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन. उसको माइनस कर देगा. और भी कमती हो गया टैक्सेबल इनकम. टैक्स कमते जा रहा है. फिर सर और क्या मिलेगा सर? तो अच्छा है, इससे माइनस करते रहने से बहुत अच्छा है सर. हाँ हाँ बहुत अच्छा है. तो 2 नंबर में तुम्हारा माइनस होगा इंटरेस्ट. तुम तो जब घर बनाया था, नहीं तो घर खरीदा था, तुम तो लोन लिया होगा ना, तो लोन में तो तुम इंटरेस्ट दे रहा है ना सर, उसको भी माइनस कर दो सर, मजा आ जाएगा. तो नेट एनुअल वैल्यू से माइनस किया 30%, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन कमती हो गया. वहां से फिर से तुम जब घर तुम्हारा अपना है, वेरी गुड, लेकिन वो घर तुम खरीदा होगा, कंस्ट्रक्शन किया होगा, तुम रिपेयर भी करा होगा ना, और रिन्यूअल भी किया होगा, तो उसके लिए तुम लोन लिया होगा. जितना लोन लिया है उसमें तुम इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट भी माइनस कर दो और भी कमती हो जाएगा. मजा आ जाएगा सर. और भी माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट भी माइनस कर दो. डिडक्ट द इंटरेस्ट ऑल्सो. क्यों सर? अरे भाई क्यों क्यों पूछ रहा है? तुम्हारा फायदा है. वो इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, तुम्हारा तो इनकम और भी छोटा हो जाएगा. और छोटा इनकम होने से और टैक्स विल बी स्टिल लेस. कैसा लगा बोलो अपनाओ. मैं और कुछ समझाने का है ही नहीं. अभी तुम यू आर रेडी फॉर डू एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. इतना ही था. डियर स्टूडेंट्स कैसे लगा बताओ? चैट बॉक्स में लिखो कैसे लगा. बढ़िया लगा? You can remember, you can please keep on chatting here, and you see my video once again. I'll give you this PDF. I'll give you this PDF to you to help you from all area. I want to help you from all sides. So I'm having for recording another 10 minutes time. I have to complete in 10 minutes time, and then again you shall get a new link. You shall get a new link. Don't worry. So dear students, अभी इसको हटाओ यहाँ से. कितना कितना आ जाता है. ओके, कैलकुलेशन, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन कैसे, एक बार देख लो. जस्ट रिवीजन एक बार देख लो. जितना मैं पढ़ाया ना उसको मैं अभी तुमको सिखाता हूँ, फिर से समरी में सिखाता हूँ. एंड मैक्सिमम 10 मिनट्स में ये कट जाएगा. बट you wait, maybe another link I'll be giving you, but because I'm committed to give you the best of understanding. सो एक बार रिकूप कर लो, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, ग्रॉस एनुअल वैल्यूज तुम समझते हो, यहां से माइनस करो म्यूनिसिपल टैक्स.
গ্রস এনুয়াল ভ্যালুর পুরা মিউনিসিপাল টैक्स माइनस कर दिया तुम्हार की पाबा नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा सर वो तो बहुत इजी है सर क्यों बार बार सिखाता है अरे बच्चों बार बार सिखाने से तुम्हारा मजा आएगा ना सिखाने से तुम्हारा याद रहेगा सो सर बोलिए ठीक है सर बोलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू से तुम माइनस करो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू आएगा ना वहां से 30% माइनस कर दो कितना छोटा में फॉर्मूला बना दिया तुमको देखो कितना छोटा में फॉर्मूला में बना दिया तो नेट एनुअल वैल्यू से तुम माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन सर कितना परसेंट अरे याद नहीं किया 30% वो सर याद हो गया ठीक है तो 30% माइनस करने के बाद में ना तुम और माइनस करो कि एक घर खरीदने के लिए नहीं तो बनाने के लिए नहीं तो रिपेयर करने के लिए नहीं तो इम्प्रूव करने के लिए तुम तो कुछ लोन लिया होगा ना यस सर तो वहां तो इंटरेस्ट दिया होगा यस सर वो इंटरेस्ट भी माइनस करो उससे तो बहुत छोटा हो जाएगा हाँ छोटा हो जाएगा तो छोटा जो होगा ना उसको हम बोलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसी में हम देगा टैक्स जितना रेट है उसमें दे देगा खत्म हो गया मेरा लेक्चर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एटलीस्ट इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच ना यू कैन गाइड योर सेल्फ यू कैन लीड योर सेल्फ इतना नॉलेज में अभी तुमको थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देगा जो तुम असाइनमेंट में करेगा और नेक्स्ट इसमें हम एक काम कर सकता है तुमको मैं अभी 2 घंटे गैप दे देता हूँ तो इसका असाइनमेंट करते करते तो नेक्स्ट हेडिंग लेता है और शुड आई कंप्लीट एट ए टाइम इफ आई कंप्लीट एट ए टाइम द अनदर हेडिंग देन व्हाट विल हैपन कि तुम कंफ्यूज हो जाएगा अनदर हेडिंग लेने से कितने इतना सुंदर तुम सीखा है हाउस प्रॉपर्टी साथ में मैं बिजनेस लगा दे तो विल बी कंफ्यूज आई नो हम एक काम कर सकते हैं अराउंड 2 बजे और एक क्लास ले लेगा तब तक तुम लोग खाओ पियो मौज करो पियो मीन्स पानी पियो और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दे रहा हूँ ये सब तुम कर लेना देखो एक मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ प्रॉब्लम देखो राहुल ओन्स ए हाउस अभी मेरा 7 मिनट 6 मिनट में खत्म करना है राहुल ओन्स ए हाउस इन गुवाहाटी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर ठीक है समझ गए सर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स वो भी समझ गया सर एनुअल रिसीव 4,80,000 ठीक है इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का लेकिन बहुत सारे और भी फॉर्मूला है रिमेंबर व्हेन मेनी फिगर्स आर गिवन इट इज डायरेक्टली वन फिगर गिवन वेरी इजी एंड आई हैव गिवन यू वेरी इजी फर्स्ट टाइम तो याद रखना कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में और थोड़ा झमेला है वो बाद में सीख लेना लेकिन अभी तो इसको कर लेता हूं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,80,000 से म्यूनिसिपल टैक्स 20,000 माइनस करने से क्या मिलेगा कोई चैट बॉक्स में लिखेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 4,80,000 वहां से 20,000 माइनस करो म्यूनिसिपल टैक्स तो क्या आएगा लिखो लिखो क्या आएगा NAV माइनस MT क्या होता है वेरी गुड नेट एनुअल वेरी गुड लव्ड इट फिर नेट एनुअल वैल्यू माइनस करने का बाद में तुम क्या करेगा इंटरेस्ट भी माइनस करो ओ उसमें नहीं इंटरेस्ट नहीं वहां से तुम माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो तो इसमें मेंशन किया ही नहीं तुम खुद करना है कितना परसेंट होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन डियर स्टूडेंट्स प्लीज राइट हाउ मच परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हाट परसेंट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू इज परसेंट डिडक्शन very good 30% I'm very happy with the students really and फिर 30% after you deduct interest of 70,000 तो जो मिलेगा ना वही तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा क्यों इसको लिए तुम इतना वरी करते हो ही तो गया प्रॉब्लम कितना सिंपल देखो तो यही क्वेश्चन ये लोग किया है ये तुम कर लेना ये तुमको मैं PDF दे देगा तुम कर लेना मैं एक्चुअली स्मार्ट क्लास ले रहा हूँ स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स सो दैट्स व्हाई ये सब स्टेप बाय स्टेप में दे के रखा है ये सब तुम कर लेगा एंड कोई भी डाउट है तो एक आदमी को पूछ लेना वो आदमी का नाम क्या है बनिक सर को पूछ लेना कोई भी डाउट है बाद में एंड यू शुड बी डूइंग दिस नाउ बिकॉज आई एम हैविंग 5 मिनट्स टू कंप्लीट टू द रिकॉर्डिंग तो ये देखो ये तुम खुद कर ला तुमको मैं फॉर्मूला बता दिया ना तुम खुद कर लगा ये सब यू हैव टू डू इट अलोन because my videos are watched by people across the country so I am using English also so देखो English and Hindi इसलिए कर रहा हूँ कितने अखोमिया कोई दियो आज स्टूडेंट्स अच्छा इसको देखो ये क्लासरूम एक्टिविटी तुम कर लेना खुद कर लेना ये तुम खुद देख लेना कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना ये सब मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ ये क्विज तुम खुद कर लेना इसको मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ मल्टीपल चॉइस तुम खुद चेक कर लेगा और खुद चेक कर लगा डाउट है तो मुझे पूछना नेक्स्ट क्लास में ही पूछना एंड ये है समरी क्या दिया है मैंने थोड़ा सा समरी दे दिया तुम लोग को
बेनिफिट के लिए समरी थोड़ा दे दिया। ये सब भी तुम देख लेना, जो अब तक पढ़ा है ना उसका समरी इसमें मैं डाल दिया। सो तुम्हारा मजा आ जाएगा, इसको जो पढ़ेगा ना तुम्हारा मजा आ जाएगा। थोड़ा रुक रुक के पढ़ो। फिर बेसिक कंपटीशन समरी का बाद में ये देखो, इसको समरी को नीचे ले जाता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ। तुमको मैं दे देगा, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी हो जाएगा एंड यू कैन स्टडी बिकॉज वीडियो एंड दिस राइट विल हेल्प यू। देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू फिर से इसको देखो समरी क्या है फिर से मैं दे दिया सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स इज नेट एनुअल वैल्यू। वहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, इंटरेस्ट माइनस करो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। इसको तुम अच्छे से लिख लेना, अच्छा से लिख लेना इसको फॉर्मूला। मैं एक ही चीज़ बार बार दे रहा हूँ। देयर स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारे असाइनमेंट्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 आप इस खुद कर लेना, इतना ही तुम्हारा असाइनमेंट है। देखो यहाँ से कर लेना। और मेरा ये 1 मिनट 2 मिनट में एक बात करेगा, फिर इसको अभी क्लास में ऑफ करेगा अभी। फिर मैं 2 बजे तुम लोग को एक क्लास लेने वाला हूँ, अनदर हेडिंग। प्लीज़ बियर विथ मी, प्लीज़ मुझे टॉलरेट करो। मैं इतना टॉर्चर करता हूँ तुमको ब्रेन में, मुझे टॉलरेट करो। और ज़्यादा दिन नहीं, ख़त्म हो जाएगा, बट यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। गिव इंपॉर्टेंस टू माई क्लासेस एंड दिस असाइनमेंट विल बी डूइंग। Now, this is income from house property, and let me stop it now. No more. It's not required. You can understand it, and you should do it at homework. This you should do at homework, and this also I have given only 2 questions. And during my class, if I have talked anything which is important for you but not given in this write up, ऐसे कोई है तो उसको भी तुम असाइनमेंट में लिख लेना। इट विल बी तुम्हारा फायदा होगा। सपोज यू आर शोइंग मी असाइनमेंट ऑफ 5 पेज, दिस इज वन थिंग, एंड यू कैन शो मी असाइनमेंट ऑफ 7 पेज। आई विल नॉट गेन एनी इनकम, बट इट विल बी टू योर क्रेडिट, अगर पॉसिबल है तो। इफ इट इज पॉसिबल, इट इज टू योर क्रेडिट ओनली, एंड दैट यू अंडरस्टैंड। सो मुझे चीटिंग मत करो। मुझे चीटिंग करने में यू चीटिंग योर सेल्फ। एंड आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रुप, everybody is so nice, so sincere. I've already understood this. So maintain it, and extra homework भी कर लेना, इसको कर लेना। ई हेडिंग हो गया अभी। चलो इसको मैं अभी क्लोज कर देता है। शेयरिंग शेयरिंग क्लोज कर देता है। शेयरिंग शेयरिंग स्टॉप। नहीं 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 नहीं, इसको इसको हटाओ। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देगा। नाउ यू आस्क मी एनी क्वेश्चन प्लीज। Please ask me any question. Dear students, please ask me any question. I have got 1 minute time. किसी ने एक बात बोल दो, मैं बंद कर देगा। प्लीज 1 person बोलो, कोई भी बोलो। কোনোবাই এটা কিবা কোৱা, মই বন্ধ কৰি দিম। এই রেকর্ডিং অফ করে দিল। স্টপ রেকর্ডিং।